Hello friends and welcome to my channel. Today we are going to learn difference between vowels and consonant. So as we all know that there are 5 vowel letters in the alphabet. On the other hand, there are 21 consonant letters in the alphabet. Vowels basic speech sounds होते हैं which is articulated with an open vocal tract. Consonants भी basic speech sounds होते हैं but consonants are articulated with a particularly or completely closed vocal tract. So friends, open vocal tract and closed vocal tract vowels and consonants को pronounce करने का एक तरीका मात्र है and there are about 20 vowel sounds in English. On the other hand, there are about 24 consonant sounds in English. So, जैसे कि हमने देखा कि 5 vowels and 21 consonants होते हैं but यहाँ पर हम साउंड्स की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में 20 वोवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं. ऑल्सो वोवल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ अ सिलेबल. इट मीन्स वोवल शब्दांश का केंद्र होता है. ऑन द अदर हैंड कॉन्सोनेंट्स हैव टू बी लिंक्ड विद अ वोवल टू फॉर्म अ सिलेबल. Also friends, as we all know that A, E, I, O, U are called as vowels and बाकी के जो remaining alphabets हैं वो consonant कहलाते हैं. So friends, I hope आज आपको vowels and consonants के बीच में difference समझ में आ गया होगा. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.